2, 3. Okay, great. Now can you touch your head? Can you touch your ears? Can you touch your knees? Can you touch your ears? Can you touch your head? Can you touch your ears? Can you touch your nose? कुछ फर्क समझा? We were basically copying what is being happening. Actually आपको मतलब एक चीज समझ के जब आपका मतलब ब्रेन प्रोसेस करता है तो बेसिकली इट इज टू सेंसेस which works very fast. One is seeing, the other one is listening. Now ये दोनों का मतलब सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है. अगर इसका सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है तो बहुत बार हम लोग गलत चीज समझते हैं, गलत चीज देखते हैं, गलत चीज समझते हैं. Exactly this is what is happening in most of the children cases every day in classroom.